चलो। नमस्कार, आपका फोरम फॉर क्रिकेट पे स्वागत है। मेरा नाम अमन है और मैं यूके के अंदर क्रिकेट कोचिंग सीख रहा हूँ। और मेरे साथ मेरे मित्र मधु है जो कि यूके में काफी साल से अंपायरिंग कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है कि कौन कौन सी टीम के क्या क्या चांसेस है सेमीफाइनल्स में पहुंचने के और उनकी क्या क्या रैंकिंग होगी। ठीक है। तो मधु जी, पहले आपका आपके लिए सवाल आप बताइए कि कौन कौन सी टीम क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं। मेरे ख्याल से आपके पास जो आपको टीम डिस्कस करनी है वो है साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। तो ठीक है। हाँ, you can ओके। start by talking about, I think Australia is very ओके। complicated, so maybe you can start with that. ओके, Or आप maybe शेयर करते हैं? okay, yes, exactly, yeah. mm, hmm, okay, so can you see my screen? यस। Okay, great. ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ इंडिया। Hmm. Okay, so India is currently at 14 points and with a healthy run rate. So we are playing against South Africa and Netherlands. Uh, it's like even if India wins one game out of the two, um, India is already through to semis. Okay, so India losing to South Africa will determine who will be the first or second position. Yes, yes, exactly. And okay, so then let's move on to Australia. So Australia is better placed of all the other teams because they have 3 games to play for, Mm-hmm. and considering they are playing against relatively weaker opponents, they are also having a very good chance. Okay, so let's say if Australia, I mean Australia has to win at least two out of their 3 games to be in a good position for entering into semis. Any Okay. other, if they win two games, that means their point is 12, and so that means they will get through actually. Yeah, And yeah, there they should are not be true. any problem. Yeah, and Correct. even their net run rate is also very healthy. So Correct. So only problem comes when Australia wins only one out of their 3 games. okay, Okay. And if they lose against Afghanistan and win against England and Bangladesh, then it does help for Afghanistan because Afghanistan now will be at 10 points along with Australia, okay. right? Mm-hmm. And if okay, and mainly like I think if New Zealand wins against Pak, of course, like Pak is out. But and if New Zealand loses against Pak, and then New Zealand also loses its other game versus SL, then it would be Australia and Afghanistan to enter into semis. Okay. So just to recap, for Afghanistan to be there, so New Zealand has to lose their both matches against Pakistan as well as against Sri Lanka. And in Correct. that scenario, New Zealand will be at 8 points. And if Afghanistan wins one of the matches, then they are through. Yes, correct. Because Because their they will net be run at, rate is not very good as compared to yes, New Zealand. Yeah. correct. Okay. Correct. Makes sense. Yeah. If New Zealand loses both of their games, okay, um, then New Zealand will be at 8. And if also Afghanistan loses both their games, then they will also be at 8. And Pakistan will be also on 8 because New Zealand is going to win from Pakistan against Pakistan because that's the scenario when New Zealand loses both of his matches. So that means Pakistan is at number 8 as well if they win against New Zealand but lose against England. Yeah, if the yeah Pakistan has to win both their games to be at 10, then no, they will be at it's 10. okay. I think if Pakistan wins against New Zealand, then they'll be at 8. Yes, exactly. Yeah.
But if they win, okay, I think you can cover the Pakistan game now. Yes, yes. Okay. Okay, yeah, no, yes. For my like, because New Zealand and Pakistan match, it's more or less determined who is going to be in semi-final. I'm talking about the more realistic scenarios, not on paper one, like with covering all the permutation and combination. Just the more likelihood what's going to happen. So as per me, uh, tomorrow match between New Zealand and Pakistan will decide who is going to be number 4. If New Yeah. Zealand wins, they are going to be number 4. And if Pakistan wins, then the situation becomes a bit tricky. But then Pakistan needs to win the last match against England as well. That can happen as well because England is not in a good form. So, so, so it's most likely scenario Pakistan will get to semi-final if they win both their matches. लेकिन अभी के लिए कल का मैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कल का मैच पूरा डिसाइड कर देगा कि भी कौन क्या कोई इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है या नहीं बन रहा Yes. Yes. है ना. Yes. Correct. और जो साउथ अफ्रीका का मैच है इंडिया के साथ, वो डिटरमाइन कर देगा कि नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन जाएगा. अगर साउथ अफ्रीका कल मैच जीत जाता है तो वो नंबर 1 पे आएगा क्योंकि उनकी नेट रन रेट भी काफी अच्छी है और और उनका जो लास्ट मैच है वो अफगानिस्तान के साथ है, तो हम मानेंगे कि वो जीतेंगे. और इंडिया का मैच नीदरलैंड के साथ है, वो जीतेगा. लेकिन जो गैप है रन रेट के अंदर, अगर आप यहाँ देखेंगे, काफी ह्यूज है यहाँ पे ना. तो इसलिए मतलब कल का जो जो संडे का मैच है वो डिसाइड कर देगा नंबर 1 एंड 2, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच डिसाइड कर देगा कि कौन सेमीफाइनल में जा रहा है. न्यूजीलैंड जा रही है या पाकिस्तान के चांसेस है, ये दो चीजें. करेक्ट. करेक्ट. सही है. करेक्ट. ठीक है. तो हाँ, जैसे आप अभी सिनेरियोज डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूज अब ऑस्ट्रेलिया अपने एक मैच जीतता है, तब चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इसका अगर एक मैच जीतता है तो फिर अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान से हारता है जो अगर ऑस्ट्रेलिया, देन थिंग्स बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. यस. हाँ, क्योंकि फिर अफगानिस्तान के भी 10 पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफी काफी ज्यादा हो जाएगा. यस. ठीक है. तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं तो जो अगर मैं रैंकिंग दूं तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका नंबर 1, इंडिया नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 एंड न्यूजीलैंड नंबर 4. ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो है. पर लेकिन कल के 2 मैच के बाद बिल्कुल वो हो जाएगा. लेकिन नंबर 1 एंड 2 इंटरचेंजेबल, इंडिया साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इंडिया, दैट्स नॉट अ थिंग. लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मोस्ट लाइकली यही है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएंगे. मैं ये मान रहा हूँ कि कल न्यूजीलैंड पाकिस्तान से मैच जीतेगा. वही लग रहा है. यस. सो अगर कल पाकिस्तान जीत जाएगा तो तो फिर इंटरेस्टिंग. हाँ, इंटरेस्टिंग हो जाएगा. फिर इंटरेस्टिंग. या इंटरेस्टिंग हो जाएगा और अफगानिस्तान का वो हेल्प करेगा वो. हाँ, अफगानिस्तान के, हाँ देखिए, अफगानिस्तान को तो अपनी खुद ही हेल्प करनी पड़ेगी. क्योंकि अफगानिस्तान को एक मैच तो जीतना ही जीतना पड़ेगा और हाँ, ये एक सेट मैच हो. तो जीतना ही पड़ेगा. हाँ, हाँ. अगर अगर न्यूजीलैंड दोनों मैच जीत जाता है और ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच जीत जाते हैं तो फिर तो अफगानिस्तान आउट हो जाएगा. फिर तो सारे वो है ना. हाँ, हाँ. फिर तो हमें तो हाँ, हाँ. हाँ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान से अगर हारती है तो अफगानिस्तान को एटलीस्ट थोड़ा हेल्प होगा वो हेल्प उससे. हो जाता है. लेकिन एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया और जो अफगानिस्तान का मैच है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि वो अफगानिस्तान को जीतना पड़ेगा, करेक्ट. है ना. तो करेक्ट. हाँ, तो काफी. सो दैट टू विथ बिग मार्जिन्स बिकॉज अफगानिस्तान का नेट रन रेट बहुत नेगेटिव है. तो बिल्कुल. जैसा आपने कहा है, जस्ट टू सम अप आवर डिस्कशन, so it is most likely the 4 teams that are shown on the screen will end up entering into semis. And most probably in this order. Most probably in this order. In fact, we will wish that it stays in that order. Yes. Because afterward, number team one, like team on the top, number 1 will play against number 4, and then second play against number 3. So
I think that would be a good scenario. So India will be playing against New Zealand most likely, और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के साथ. तो ये एक Okay, likely scenario बनता है. correct. So yes, so इसके हिसाब से इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि that will determine India can be on the number 1 position to play against New Zealand if we think that we fancy our chances against New Zealand. On the other hand, if we end up at position 2, then we will be playing Australia. I would like India to play against Australia rather than New Zealand. My personal opinion. In fact, that exactly what happened back in 2011 as well. India played against. So then let's hope that South Africa is number 1 position, India second, third Australia, and fourth is New Zealand. And I think according to the predictions also, the same thing is going to repeat what happened in 2011. And yes, let us hope for that. Yeah, that's great. That's great. So I think we covered most of the part. We can't cover all the permutation and combination as of now, but we covered the more realistic scenarios. Yes. तो हाँ, ये काफी अच्छा है. और अगर मैं ये कहना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को, अगर उन्हें हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज हमें लाइक करें, हमारे पे कमेंट छोड़े. अगर आप कमेंट छोड़ेंगे तो हम आपका हम आंसर्स भी दे सकेंगे. अगर आपको क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में डाल सकते हैं, और सब्सक्राइब करें हमें, ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले. वी गेट correct. And we will try to improve our videos and the videos in terms of the content and the subjects that we would like to or you would like us to cover. Sure. So मधु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दोबारा. So thank you very much. Same with me, Aman. It was a good discussion.